एवरीवन, माई सेल्फ सुचित्रा पुजारी। वेलकम टू माई चैनल दैट इज़ सरोजा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन विद सेक्शन। सो एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में regarding this contract act का definition. So first we will learn about this topic and then we'll solve that particular PYQ question. So without wasting any time, let us start with the video. So this is the whole thing which we are going to discuss in this lecture. So first see offer. Offer is given under section 2A. So offer section 2A, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. So इस definition को तोड़ के we have to learn. See, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing, एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है कुछ करना या फिर कुछ ना करना, डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर. सो इसका मेन फोकस क्या है कि सामने वाले का हाँ आना चाहिए. सो एक पर्सन है जो सामने वाले पर्सन से हाँ चाहता है फॉर व्हाट, फॉर डूइंग और फॉर नॉट डूइंग समथिंग. एग्जाम्पल समझो, एक पर्सन है बोल रहा है कि इफ़ यू परफॉर्म दिस एक्ट ऑन स्टेज आई विल पे यू दिस मच अमाउंट. सो ही इज़ मेकिंग दैट पर्सन टू डू समथिंग. Another example, if a person says, if you don't sing, I'll pay you 5,000 rupees per month. So this is what he is abstaining someone to do something. So singing से रोक रहा है एक person, for that he is paying. So इन दोनों में same example में क्या है, हाँ चाहिए सामने वाले person से. So this is known as offer. Next, section 2 subsection B, acceptance. So what is acceptance? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. So simple है. Acceptance is what? अभी इसने ऑफ़र किया था कि मत गाना आप. So इसको जब पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्ट किया, signifies his assent, so the proposal is said to be accepted. So when the proposal, that is offer, जब accept होता है, so offer plus acceptance, it becomes promise. Clear है? So next, promiser and promisee, section 2 subsection C. So the person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called promisee. So offer जिसने किया है उसे promiser कहेंगे, accept जो person कर रहा है उसे promisee कहेंगे. Next, सबसे important and सबसे easiest definition if you cut it down छोटे parts में. See, consideration, section 2 subsection D. जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे ही रीड करना. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. So what is consideration? Consideration means something in return. So यहाँ पे जो definition दिया है easy है देखना. When at the desire of the promiser, promiser के desire पे promisee क्या कर रहा है, promisee या फिर कोई और person, promisee or any other person, C, has done or abstained from doing. So this is a past tense. Does or abstains from doing, present. Promises to do or abstain from doing, so future tense. So past, present and future tense पे बात कर रहे हैं. Something, such act or abstinence, perform करना या फिर गाना ना गाना.
सो जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था कि परफॉर्म करना, या फिर कोई एक पर्सन को रोक रहा है कि सिंग नहीं करना, यू शुड नॉट सिंग. सो लाइक दिस, act or abstinence of promise is called consideration for the promise. Is it clear? Now, after section 2D, come to section 2E. 2E is what? Agreement. This section is for agreement. Easy है. Every promise and every set of promises forming consideration for each other. सो जो प्रॉमिस बना है, प्रॉमिस कैसे बना है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट बिकम्स प्रॉमिस. सो एक प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या कर रहा है? इट इज़ फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. सो दोनों को कंसिडरेशन मिल रहा है. इट इज़ नोन एज एग्रीमेंट. क्लियर है? सेक्शन 2E एग्रीमेंट. नाउ आफ्टर एग्रीमेंट कम टू कॉन्ट्रैक्ट. Section 2H defines contract as an agreement enforceable by law is contract. So agreement plus enforceability by law, it is known as contract. Section 2H. Now come to two more definitions, small definition. One is void. Section 2G. An agreement not enforceable by law is void. If it is enforceable, it becomes contract. If it is not enforceable by law, it will become void. Is it clear? Void means impossible. Next, reciprocal promise. Section 2F. See, promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. So, if two person are there, एक person ने consideration दिया है, इट कैन बी होल कंसिडरेशन या फिर पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन एक दूसरे को जो दे रहे, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस. इज इट क्लियर? सो दिस इज द लास्ट सेट ऑफ डेफिनेशन. फर्स्ट इज voidable contract. Section 2I is voidable contract. What do you mean by voidable contract? That means you can avoid the contract. Here one option is there to the person who has entered into the contract by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. So if your consent is not free, that is section 13 deals with free consent. अगर free consent नहीं है, that means section 15 coercion, section 16 undue influence, section 17 fraud, section 18 misrepresentation, section 20 mistake. इनके थ्रू आपने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास ऑप्शन है कि you can avoid or you can cancel that contract. Is it clear? So voidable contract is, see the definition, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Now come to the last one, void contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Section 2J. इसका एग्जाम्पल देती हूँ. सो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक शिप के थ्रू ही इज़ गोइंग टू टेक आउट द शुगर कंटेनर. सो शुगर कंटेनर लेकर जाने वाला जो शिप था वो बीच समुंदर में ही डूब गया. सो द मोमेंट जो शिप है वो डूब गया, दैट मीन्स जो मटेरियल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, दैट इज़ शुगर, वही नहीं है आपके पास. दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल. यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नाउ बिकॉज द मटेरियल दैट इज़ शुगर इज़ नॉट देयर. So this is known as void contract. Is it clear? That means it is a impossible contract. Now we'll solve one question. So PYQ 2020 shift 1 का question है. Which one is the correct sequence implied in the Indian Contract Act 1872? So as we have discussed, first क्या आता है? Offer. Offer when accepted becomes promise. So offer when accepted becomes promise. So AE, offer accepted, it becomes promise. So AEC. See, we got the answer. Still हम लोग चेक करते हैं. Offer when accepted becomes promise. So every promise and set of promises forming consideration to each other is known as agreement.
agreement when enforced by law is contract. So when the agreement is enforceable by law, it becomes contract. So A, E, C, D, B is your answer. Is it clear? Easy है. Offer when accepted becomes promise. So then it becomes agreement. Agreement जब enforce होता है it becomes contract. Easy था question. A, E, C, D, B is your answer. Thank you everyone. Keep learning, explore more, stay curious. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय.